अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज के प्रोग्राम को अगर मैं एक आरडीएक्स एक्सप्लोसिव प्रोग्राम कहूं तो गलत नहीं होगा। एक शख्सियत है जो सोशल मीडिया पे हैं, वो बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि ए सोल्जर नेवर रिटायर्स, ए सोल्जर सर्व्स हिज नेशन अनटिल एंड। और वो सोल्जर एक दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, जिसने हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ के कुर्बानियां दी हैं। तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रोहित देव साहब, नमस्कार एंड वेलकम टू नमस्कार। द शो। धन्यवाद आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सवालात बहुत सारे हैं आपके लिए। मैं शुरुआत करूंगा, अभी जो करंट एक हॉट टॉपिक चल रहा है इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर। कल बिन्यामिन नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं वार्न करता हूं उन फॉरेन फोर्सेस को कि जो इंटरवीन करना चाह रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में टू डिफेंड गजा, कि हम उनको भी एबॉलिश कर देंगे। हमारी आर्मी ने गजा का घेराव कर लिया है। वी आर एडवांसिंग, वी विल रूट आउट टेररिज्म, और जहां पे ये टेररिज्म खत्म होगी, हमास सरेंडर करेगा, दैट वुड बी अवर न्यू बॉर्डर। ये राइट। बड़ा स्टेटमेंट है सर। अब मुझे ये सवाल है आपसे कि भारत तो सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का। पीओके जी से भारत का इतना बड़ा इलाका, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान में इतने ट्रेनिंग सेंटर हैं। व्हेन वुड भारत टेक दिस इनिशिएटिव, और शुड भारत टेक दिस इनिशिएटिव? जी, पहले एक टिप्पणी कर दूं इसराइल के ऊपर, क्योंकि आपने शुरुआत नेतन्याहू से की। तो काफी दृढ़ विचार के वो सैनिक खुद रह चुके हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने अपना अनमोल गवाया है। और इफ आई पुट इट वेरी माइल्डली, Israel is a very resolute country in terms of national interest and security. So they won't let anybody play around. So his messaging is to people basically to say that you will not be able to stop the Israeli forces to defeat the terrorist actions of an enemy state. And the enemy state emanates from primarily Hamas. एंड जो भी वहां पर हुआ है, आप देखिए, अगर मैं कोरिलेट करूं, कल को अगर कश्मीर की बात खत्म हो जाए और कोई सोल्यूशन मतलब एमिकेबली निकल जाए गलती से भी, तो क्या क्या करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आर्मी? करेंगे क्या? क्योंकि उनका पूरा वजूद, पूरी जो इंटरेस्ट है, and all their wherewithal they have been cultivating through funding from abroad and everything else, is focused to do some mischief in Kashmir all through and out, whether it's propaganda machinery coming through the United Nations representative of theirs, coming to their diplomats, buying out media. They have tried everything. But Israel, if you see, and if you watched, I think day before at the UN, there was a person from UN Watch. If I remember his correct name, he was some Yusuf, Mr. Yusuf. And Mr. Yusuf very categorically on center stage in UN center said that Hamas is responsible for all the misery. It has brought a lot of misery onto the citizens of Palestine. And he favored the action what was being done by Israel. And he himself said them, I'm part of an ex-Hamas person. So you can understand, you can shield an organization and make a cocoon around it. आप किसी घेराव को बना के सच को छुपा सकते हैं, बट किसी ना किसी दिन वो जो घड़ा है वो फूटेगा और सच बाहर आएगा। तो ऐसा ही कुछ है पाकिस्तान के साथ। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, प्रोपेगेंडा जितनी मर्जी की, और मैं दाग देता हूं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की, जो चली 4 से 5 दशक या 6 दशक तो अच्छी चली, बट इस पिछले कुछ सालों में वो प्रोपेगेंडा पे हमने भी काफी वार किया है, डोजियर्स दे के, टेररिस्ट एक्ट्स के फैक्ट्स दे के। यहां तक कि जब बालाकोट पे स्ट्राइक किया, तो क्योंकि चीनी इंटरवेंशन किसी भी हालत में नहीं चाहिए था, मैं नहीं कह रहा कि चीन इंटरवीन करता मिलिटरीली, बट क्योंकि उसको यह भी दिखाना था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्योंकि वीटो पावर है, उसको एक्सरसाइज करते हुए कोई मुहिम ना करे या कोई प्रेशर ना डाले यूएन पे। तो उस टाइम पर भी गॉड ब्लेस हर सोल, स्वर्गीय सुषमा स्वराज चीन गई। शी वेंट टू that country and presented the dossier. So India is very clear. We have now mapped out all actions of terrorism. Insofar as POK is concerned, it is an illegally occupied territory by Pakistan.
एंड व्हेन पाकिस्तान टॉम्स टू द वर्ल्ड, जब वो पाकिस्तान जाके ऐलान करता है कि भारत यूएन का रेजोल्यूशन नहीं मान रहा, तो वहां पर एक बहुत ही विचित्र चीज है, क्योंकि जो पहला स्टेप है उस यूएन के एक्शन का, वो तो ये है कि पाकिस्तान पीओके खाली करेगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। तो पाकिस्तान ने तो कभी इसकी बात ही नहीं की, कभी पहल ही नहीं की, अपने लोगों को गुमराह किया है। और गुमराह इस तरह से किया है कि कश्मीर का वजूद दिखा कि हम किसी दिन कश्मीर को ले लेंगे, जितनी भी इकोनॉमिक फंडिंग ली है उसको ड्रेन कर दिया है, उसको ड्रेन कर दिया है अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को बढ़ाने में। इन्वायरमेंट का नाम लेके बंद बनाए हैं जो मिलिट्री स्टैंडर्ड के हैं कि भारत के टैंक अंदर ना आ जाएं सियालकोट में कहीं और। उदाहरण दे रहा हूं, काफी पैसे खर्च किए हैं उन्होंने टेररिस्ट को, जिहाद को, ट्रेनिंग को, आर्म्स एम्यूनिशन को खरीदने के लिए। तो ये सब अगर नहीं करते, ये 6 दशक जो उन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम खुद ही आज थोड़े अच्छे स्टेटस में होती। उनमें जो अभी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, जो मोहताज हो रहे हैं अपनी लाइफ में, उतने नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि इस नजरिए से अगर देखें, जहां तक इसराइल का सवाल है, एक दृढ़ निश्चय है, देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन दैट कंट्री। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, एक बहुत छोटा एग्जांपल। मेरी वाइफ किसी स्कूल में पढ़ाती थी आज से 3 साल पहले, और वो इंटरनेशनल स्कूल था, तो उसके अंदर डिप्लोमेट्स के बच्चे भी आते थे। तो इसराइल की एक फैमिली के एक बच्चा आता था, लड़की आती थी। तो हमारे को क्या सिखाया जाता है कि अगर आप जा रहे हैं और किसी को कुछ आपकी वजह से हो जाए, कुछ प्रॉब्लम, या आपने उसको अपना कंधा लगा दिया, कुछ हो गया, तो सॉरी बोलते हैं, करेक्ट? मुझे इंसिडेंट याद नहीं है क्या है, बट कुछ इस तरह की हरकत थी कि मतलब एक्सपेक्ट किया गया कि वो लड़की सॉरी बोलेगी। उस लड़की ने सॉरी नहीं बोला, तो उसको सिखाने की कोशिश की, उसको समझ में भी नहीं आई। तो जब दोपहर बाद उनकी मदर आई उनको लेने के लिए, तो उनसे जब बात की तो बड़ा क्लियर बोला उन्होंने कि ऐसा है कि हमारा कल्चरल अपब्रिंगिंग ऐसा है, सोसाइटल ब्रिंगिंग ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में ये वर्ड नहीं है। इतना पेन देखा है, लोग बैठे बैठे, घर वाले, कोई रिश्तेदार बॉम्बिंग में मर रहे हैं, टेररिस्ट का शिकार हो रहे हैं, जो इतनी हार्डशिप से गए हैं। तो उनको इस उनकी उनकी अंतर, मतलब आत्मा तो नहीं बोलूंगा, बट उनके हैबिट में नहीं है कि इस तरह का एक्नॉलेजमेंट करना। तो किस तरह से इसराइल ने झेला यार, आप उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क देखिए। मेरे को कोई शक नहीं है, जिस तरह की उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया। और उनका इसका सबूत उन्होंने बहुत बार दिया है। कुछ परिचित है, कुछ हमसे अपरिचित है, बट आप ऐसा देश को देख रहे हैं, ऐसे देश को देख रहे हैं हम, जो जिसने एक बार कुछ बोला तो वो करेंगे। और आज की पॉलिटिकल हालत में भी वो अगर आप देखें उस नजरिए से, तो इसराइल को एक डिटरमिन्ड लीडरशिप, डिटरमिन्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स ही, मतलब मतलब अनिवार्य तो नहीं कहूंगा, बट उनको उनके हित में है। सो आप जिस नजरिए से देखें, चाहे आप उनके इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें, चाहे आप उनकी देयर डिटर्मिनेशन टू हिट हमास, all is intact. Unlike us, for a long time as a country, we turned the other cheek for any which way. In a population of 1.3 billion, I can very jokingly say कि 8-10 मर गए तो क्या हुआ? But every human life is very precious. For Israel, one life is very precious. For us, unfortunately, and in our subcontinent with countries like Pakistan and India and others, politics takes a shape where at times national interest and security is sacrificed to a degree, maybe not fully. A measured decision taken by polity can cause that. We had a lot of beheadings, you remember? 5-6 years back, 10 years back, sorry, we used to have a lot of beheadings. And those beheadings used to happen, and sometimes you used to retaliate, and sometimes you didn't hear of retaliation, right? And whenever any military which is deployed on borders, I'm quite sure when IDF is deployed on the borders or to do an offensive into Gaza, they have a situational map very ready that if this happens, you do this, no questions asked. But in our case, unfortunately, even our military, over a period of time, because of this, wayward kind of a political discourse, had to look back because they had a doubt. करना क्या है? रिटेलिएट कैसे करना है? आर्टिलरी खोलनी है कि नहीं खोलनी? हवाई जहाज से अटैक करना है कि नहीं करना उनके टेररिस्ट कैंप पे? So that kind of mindset of a nation is very important. Unless the leadership is very much inclined and no change, people said Trump जाएंगे तो Biden आएंगे तो US को बेच देंगे चाइना को, right? All that we heard. But do you think it will happen? Because irrespective of Democrats or Republicans,
one thing is constant in US: the national interest and the method to pursue it to achieve the desired goals is sacrosanct. Nobody fiddles with that. Not even the CIA, not even the military, Pentagon, nor even the leadership. They are very clear. So for them, it is national interest. So if China is a long-term person who's going to hit the national interest, they maintain that. Unfortunately for us, and more so for Pakistan. आप देखिए कितनी हुकूमतें निकल गई हैं पाकिस्तान में. जो आता है, जिस नजरिए से आता है, वो फाइनली आके कश्मीर की बात करेंगे. आप बात करेंगे कि हम बात करना चाहते हैं इंडिया के साथ, और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में आप बोलेंगे कश्मीर की बात होनी चाहिए. आप कैसे बोल सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया है कि अगर आप टेररिज्म को बढ़ावा देंगे और टेररिस्ट कैंप्स वहां पे रहेंगे और टेररिस्ट आएंगे एलसी के अक्रॉस, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे. सो ये स्टेटेड जानने के बाद भी आप कर रहे हैं. आप अपना बहरूपिया दिखाना चाहते हैं, आप एफएटीएफ से बचना चाहते हैं एज पाकिस्तान, की हमारे को ब्लैकलिस्ट ना कर दिया जाए. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो मैं समझता हूं कि भारत अभी इस स्टेचर पे पहुंच गया है विद पाकिस्तान कि उस तरह का टर्निंग द अदर चीक या टू मच ऑफ पोलाइटनेस या टू मच ऑफ एंगेजमेंट is not required. We have functioned so well in the last couple of years after that diktat to say we will not engage with you. Has it affected our economy? No, it has grown. Has it affected any of our welfare programs for our own people? No. Has it affected our international relations? No. Whereas we have been able to go to UAE, the Middle East, the US, the European Union, and cut the funding, channels for Pakistan. Cut the arms and weaponry coming into Pakistan. People are not giving them better material to fight wars today. Especially the kind of equation between Pakistan, China, Turkey, and some other nations, and the way they are doing, the diplomacy, it is not palatable to a peaceful world. So to do that, we have done the best way to present facts, and that is the way forward. So I think much like Israel will do whatever it wants to do in the Gaza Strip, India today is in a position, but India should not. If you were alluding to that we should also take over POK, probably I would say that is probably not the correct engagement correctly to think of, because why should India go down to take POK today if we say that we'll take it in next 6 months? Is it feasible? The answer is yes. Is it that we can do militarily and be so diplomatically strong that nobody will intervene? The answer is yes. Will we get intelligence to do enough? Yes. Will we make sure that this time we don't falter like Kargil and we have got enough ammunition and every spare reserve to our mechanized forces and air force to fight? We will have. But what it will do is it will push us back by a few decades in terms of our economic discourse. And does India want to do that? Is it in our favor? No. You are facing a mammoth of a China where there is a struggle today to make sure that your surface communication, your aerial communication, your helipads, whatever infrastructure, your force accretion, everything goes higher and higher to meet that challenge of tomorrow. It's a challenge today itself, and we should not be wasting then so much of energy on Pakistan. So if I look at that way, a small nibbling action, being able to draw out Pakistan and make it expand its reserves is good enough today. मैं अगर एलसी की बात करूं, एलसी पे अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है दो देशों की, पाकिस्तान के पास मान लिए लेमन टर्म में समझाने के लिए 100 राउंड एम्यूनिशन फायर करने की क्षमता है टोटल मिलिट्रीली. तो इंडिया के पास 1 लाख की क्षमता है आजकल एज पर इकोनॉमी. तो ऐसे देश को आप वो 100 राउंड एम्यूनिशन एलसी पे खोलने को मजबूर करिए. ये एक नजरिया है. सो आप एलसी पे लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके कंट्रोल में है. पीओके पूरा नहीं लेना, ठीक है, ये जो चढ़ाई है ये हमारे पर फायर कर रही है हर रोज, हमको तंग कर रही है, उसको निबल करिए, छोटा सा पैन बना के उसको उठा लीजिए. So you can do nibbling action, and when you get to a higher ground, you have more in-depth observation, and you can certainly roll down anytime you want to. So you don't have to fight war to claim POK. And POK में है क्या? POK में through the kind of I will say genocide, the initial population has been to a large extent replaced. One had intelligence inputs 12 years back, and it must have got worsened. That time, the military people, the one in ranks and otherwise, were been put in POK as Kabila commanders of that area, given arms and ammunition and given training to muster the youth to face the Indian army when the time came. And that's they have done south of Sialkot as well, in those reaches where they had villages and border areas, remote areas. So while they have done all that, why should we? Why should we? Right? And you have crippled that nation in any which case in the last 8-10 years. You have crippled because the funding is so meager.
It is now going and asking on any terms for people to give, and I'm very happy. I remember, and still today, whenever I used to go out and we had beggars on the streets, right? Our countries had beggars on the streets, we still have. And that time I used to think I will not give money to anybody. And as a principal, I used to say, please come with me and have food. So if I was at a station and there was a joint there, or a Connaught place where there was a McDonald's or something, I should take them there and get them served the best meal possible. But I never gave money. So this is the thing, if Pakistan today, and what you say, what the Middle Eastern countries have started doing with UAE and in the lead, they haven't given money, they have given rice bags, right? So if you have a problem, they are giving you a solution in a way that you can't exchange it for dollars tomorrow and use it for a nefarious mean. How is that happening? It is happening because people are getting more and more convinced. The dream of taking up the Islamic Caliphate and Pakistan will be, that lead. It's all fine to talk about, but who's going to pump money into your economy to make you that lead? In which case is a fallacy, right? With so much of poverty and things to do in the country, if your entire orientation is the Islamic Caliphate and Kashmir, I'm sorry, the priorities are wrong. Priorities are wrong. The brains of Pakistan who could survive have left Pakistan, and more brains, as they are nurtured, are either leaving or are under a threat to be there, and they're talking some different kind of a language and hobnobbing and towing some line which is not as per their intellect. We have many in India as well, right? So हमारा तो हाल ऐसा है, जब अंग्रेज आए थे ना, एक ही देश था ना उस टाइम पर, तो अंग्रेज ने हमको गुलाम बनाया. उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, बट मैं अंग्रेज से शुरू करता हूं. और एक जी हजूर, इसको मैंने कॉइन किया टर्म को, जी हजूर सिंड्रोम आ गया हमारे अंदर. तो हम बाबू बन सकते हैं, जी हजूर कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, जहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, बोला हम आपको मिलिट्री में सूबेदार बना देंगे. ऑफिसर कभी नहीं बनाया उन्होंने, सूबेदार बना दिया. तो सूबेदार को क्या टास्क मिला कि तुम और तुम्हारी टीम, इनमें कोई बगावत नहीं आनी चाहिए, इनको ऐसे कराओ वैसे कराओ, इन लेबर को ऐसे कर दो, उनको वैसे कर दो, हमारा ये बिल्डिंग बना दो, हमारा ये काम कर दो, सब करवाया हमारे साथ. और ये जो जी हजूरी की जो ये जो कंडीशन है, ये एज अ कैंसर हमारे सोसाइटीज में है. पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और जो भी भारतवर्ष का पूर्ण रूप होता था, जहां पे अंग्रेजों ने ये शासन किया, वो घुस गई है. तभी आप देखते हैं कि हमारे पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स दोनों देश में किस तरह से सलामी देते हैं एग्जीक्यूटिव को. अपना काम अगर उनको गलत भी करना पड़े तो करते हैं. तो आप देखिए, ये जो सिंड्रोम है ना, अगर इसमें आप ग्रो करेंगे तो ये किसी देश के इंटरनल हित में नहीं है, एंड खासतौर पे पाकिस्तान के. क्योंकि एक गुलामी से आप निकले, आप एक देश बने, कैसे बने उसको अगर छोड़ भी दें, आपकी हुकूमत पे किसने किया आपकी हुकूमत? आप फिर भी जी हुजूरी काफी कर रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेट कर रही है. जब चाहे किसी लीडर को हटा दिया, जब चाहे जो लीडर ठीक नहीं है उसको भी हटा दिया, किसी को मरवा दिया, और जो बात करने को तैयार है, आपकी हम जी हुजूरी करने को तैयार है, उसको बैठा दिया. अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका स्टेचर कहां है, अस्तित्व कहां है, जो बोलते हैं एज ए कंट्री. और ये जब अस्तित्व ही नहीं है, तो कहां पाकिस्तान, कहां पैलेस्तीन, कहां इजराइल. इजराइल का अस्तित्व देखिए, एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी वो जज्बा है. हमस में भी जज्बा है, बच्चा पैदा होता है बट वो गलती से गन उठा लेता है. और वही अगर पाकिस्तान में तालीम मिल रही है कि हमने जिहादी करना है और कश्मीर छीन लेना है, तो अगर आपको छीन लेना होता तो अभी तक आपने छीन लिया होता ना. तो ये हुकूमत समझ क्यों नहीं रही है? अब बोला उन्होंने कि कुरैशी जी ने कि कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम है, शायद मुंह से निकल गया होगा उनके, बोलना नहीं चाह रहे होंगे, बट समझ रहे हैं. फिर चीन कूद पड़ा जब 370 हटाया. चीन क्यों कूदा? चीन को कोई मतलब नहीं है कश्मीर से. चीन को मतलब है कि जो सड़क सीपेक की जारी है ग्वादार पोर्ट तक, वो सलामत रहे, और वो पीओके से जारी है. तो आप अगर देखें, पाकिस्तान ने इलीगली अनेक्स किया है पीओके को, और उसका एक हिस्सा दे दिया है चीन को. और चीन को वो हिस्सा मिलने के बाद सीपेक नहीं, उसी एरिया में मिनरल्स, माइनिंग सब दिख रहा है, उसके इंटरेस्ट हैं. इलीगल ऑक्यूपेंट है, तो हल्ला कर रहा है कि 370 क्यों है, हमको पसंद नहीं. वरना चीन को क्या मतलब 370 से? अगर सीपेक नहीं आ रहा होता, 370 का चीन से कोई लेना देना ही नहीं है. तो अपनी खामी को छुपाने के लिए, जो गलत किया है उसको छुपाने के लिए, एंड क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है वीटो पावर लेके, तो अलग मोम जमा पहनाने के लिए, करना तो आसान है, कर रहे हैं. बट ना भारत बेवकूफ है,
ना फ्रांस है, ना अमेरिका है, ना रशिया है, कोई नहीं है, ना जापान है, ना ऑस्ट्रेलिया है, जितने भारत के दोस्त हैं वो भी बेवकूफ नहीं है, ना इसराइल है। तो मैं समझता हूं कि ये वे फॉरवर्ड है। एंड जो इसराइल में होगा आरिफ जी, वो तो होगा, जो इसराइल करेगा वो तो करेगा। और मैं समझता हूं कि जो क्षमता उनके पास मिलिटरली है, डिप्लोमेटिकली है, वो सही अंदाज में अपना काम करेंगे। और यूएन और नो यूएन इंटरवेंशन, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। दे विल डू एंड देयर माइट विल प्रिवेल। कर्नल साहब, इसराइल मिलेनियम से एक ज्यूज स्टेट रहा है। किंग डेविड थे, किंग सोलोमन थे, हजरत मूसा थे, मतलब आप देखें, लेकिन इनके ऊपर इन्वेजन होते रहे। रोमन्स ने किया, हालांकि जीसस वाज ए बोर्न ज्यू, लेकिन रोमन्स ने किया, फिर क्रिश्चियंस ने किया, मुसलमानों ने किया, अंग्रेजों ने किया, सब ने किया। आज वो एक ज्यूस कौम, चाहे वो एथियोपिया में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, इसराइल में रहते हो, इंडिया में रहते हो, वो इसराइल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। दे आर वेरी मच नेशनलिस्ट। 100% जी। कंपेयरिंग दैट टू भारत, भारत एक युग युग से हिंदू राष्ट्र रहा है। और आज आपको जो बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक जो 60-65 करोड़ मुसलमान नजर आते हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं। और ये एक जमाने में हिंदू थे। जितने इन्वेजन भारत पे हुए, जितने अत्याचार भारत पे हुए, क्या हिंदू कौम भी इसी तरह नेशनलिस्ट हो चुकी है, इतनी ही यूनाइटेड है आज, कि वो अपने देश के लिए, नॉट एज ए रिलीजन, क्योंकि इजरायली भी एज ए रिलीजन नहीं, अपने स्टेट को सपोर्ट करते हैं वो। तो क्या जी आज का हिंदू इतना यूनाइटेड है, इतना नेशनलिस्ट है? देखिए, दो नजरिए देखने के आरिफ जी। पहला तो है, जब हम भारत थे, सोने की चिड़िया, तो हम सब एक साथ थे, ठीक है। हमको किसी अंग्रेजी सेना ने कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में मेरे हिसाब से इतिहास में हराया नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई जयचंद पैदा हुआ है, चाहे आप देखिए अलेक्जेंडर के टाइम से या कहीं से भी देखिए, किसी ने पनाह दी है, किसी ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, किसी ने खुफिया तरीके से दरवाजा खोला है, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक। तो ये हमारी जो मेंटालिटी है, ये किसी रिलीजन का रूप नहीं है। किसी हिंदू या किसी खास मुस्लिम या किसी और रिलीजन के लोग ने इसको जयचंद का रूप नहीं धारण किया, हिंदुस्तानियों ने धारण किया। हिंदुस्तानियों की जो खामियां हैं उसको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और हमारे को गुलाम बनाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। बड़ा राष्ट्र है, बड़े राष्ट्र में हर एक आदमी की एक एक पद्धति थी, एक रूल करने का, क्योंकि सब एक किंगडम के तौर पे थे। सो एवरीबडी हैड अ ग्राउंड टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी ऑन। कंपेयरिंग दैट टू Israel, small nation, been through repeated eras of such like activities, and all being baked in the same oven over and over again. One oven. Here there are many chulas, ovens and tandoors. Everybody's got his own fiefdom. When we were Bharat, so Israel has grown through and become stronger together. The resolve has only increased, and it is that same epitome of a, I can say, a nationalist feeling in each Israeli. And outside the country, they are very powerful people in decision making, in money matters, business. They influence, right? Now look at Bharat when it broke into a couple of pieces post 47. We still had choices being given to join the other side, and then what Sardar Vallabhbhai Patel did to make sure that people remained. I'm not saying that the seeds of a little bit of unrest continued ever since. Maybe because everybody had an axe to grind. If you have an axe to grind and you've been told to merge with the state, and if your property and everything else which you have earned over a fiefdom by doing whatever you did, good or bad, is going away into a particular notion of a central government, things will be a little different when you see the outlook. So I'm quite sure some seeds were sown there. It can't be that all things happen when we come to a political kind of a discourse in our country, that if this government is there, it is good. If this other government comes and there is unrest, it's not like that. It may be flaring up in various proportions, because जिनकी सत्ता गई है उनकी मानसिकता भी वही है, right? So it's not more so
that there is a threat of any religious conflict in my country. It is more so how these political vultures have been able to utilize this over a period of time. You'd see one thing, I always keep saying this: the primary concern of our nation for long has been education and awareness, which is combined with that. Imagine if we were 100% literate in 1955 or 1960, and thereafter our population has only exploded, right? These political vultures, so to say, have exploited the common man. इनका बस चले तो अनपढ़ ही अच्छे हैं, क्योंकि वो पहले एक गिलास लस्सी पी के वोट दे रहे थे, उसके बाद 10 रुपए भी ले रहे थे, अभी शायद 4-5 हजार रुपया दे के और एक बिरयानी खा के भी वोट दे देते हैं लोग, राइट? You see the reason. We had elections. Elections is a necessity. The government could not probably come up correctly or collectively. I will not blame the government, the political parties. They couldn't come and think that we can have canvassing for the elections on electronic media. So 9 parties. It was also in the Bihar election. When you see the news, if you can Google there, 9 parties say no, we want to have physical canvassing. And while they must have said, please come, wear mask, do social distancing, in hordes, when the elections were about to happen in Bengal for some business trip, I was in Calcutta and I was traveling in hinterland to see. So local level congregations were still on there, and small autos, open autos, like which carry some goods in a city or a town, in that 10-15 people, those pickup trucks, all going for rallies with all caution to the wind, right? So Yes. when you see our society, it should more to do with where have we reached as a society itself. An educated man cannot be exploited. An aware society cannot be exploited. And as long as this was not happening in our country, they were exploited. We were exploited. And these vultures prevailed. Vultures have got no problem. 10 die, 20 die, mayhem happens. What difference does it make to them? As long as, political roti sik rahi hai, problem nahi hai. And unfortunate, I'm saying it very frankly, it's unfortunate. It is unfortunate, but the cost of a life is so meager that your political ambition can trample it. This is not what we want as a society. And that is why my focus also, when I was speaking off the record to you, was education. That's the way to create future citizens. Why people like me and you, who are actually insignificant otherwise, are today playing this role, is to do a lot of opinion shaping more in the hinterland to get the youth together. It is not about getting any community or any caste or creed or religion together. It's more of getting the Indians together. And that is the way to survive. Because if we create cliches, there will be fault lines developed within us. The worst fault line of any country is not a military fault line or anything else. The worst fault line is the capability of the enemy to enthuse unrest in the minds of your people to create the situation of unrest. That is the worst. And that is what is currently happening all over the world and also in India. So the deep state from abroad, the evil nexus of what I call it, the American cabal, I don't name people directly, but whether they are in media or they are in the Bollywood or they are in the polity or they are in the bureaucracy, they're all over, right? For years, I believe, even to meet its end, Pakistan has cultivated a lot of agents through its illegal funding in India in all strata of society, right? So when you have such people already in India, they, for money, will do something. And the vulnerability of the uneducated class, जो बैठा हुआ है बर्दवान एरिया में बंगाल में, उसको क्या मालूम पड़ रहा है? कौन सी टीवी देख रहा है? वो जो उस पे आ रहा है वही है ना, जो स्टोरी आ रही है, या फिर जो लीडर ने आके बोल दिया. You see Delhi today, it is in the middle of a pandemic crisis, right? The initial tone of debate in my country, in Delhi, 10-15 days back, when this hit us in March, was political. The chief minister is trying to rewrite the government, belittle the government, and trying to show off. Not ready for an audit. The central government has stepped in, right from ITPP, army to everybody else has been, given. They are doing everything possible humanly to get the oxygen in. And when they ask for audit, the narrative changes. But that is something which an educated person like you or me can understand. And tomorrow we are, quite wise to vote or otherwise. But common man, these people, these uneducated half MLAs will go to the basti tomorrow
and they, through their stooges who are earning 100 rupees, 200 rupees just to say this every day, will go and tell the masses कि सब कुछ ठीक था, but वो मोदी सरकार ने सहयोग नहीं दिया. That is the irony of our country, both Pakistan and India. The gullibility emanates from the lack of awareness and lack of education to take the right decision. Otherwise, you won't be electing so many criminals to the parliament or the legislative assembly. But the goons rule at times, you know. So that is the way. And I see not from an angle of a religious point of view. My personal endeavor would be, as long as I live, to make sure that the youth, irrespective of any division, whether caste, creed, and especially religion, because that is the most exploited and the worst impacting thing on our country today. It has got a huge impact. It snowballs. You know, Khalistani state, funding from people in Canada, abroad, this, that, roots, coming down to, you know, even political parties here who take money to create an unrest. That is the worry. Because in common sense, as I've grown in the army, I have actually not even thought about the line of religion. When I was in school as a kid, my teacher told me three things, you know, which were a taboo to talk publicly: religion, politics, and sex. And in that order, I've retained that. It was a very good learning given to me. Probably everybody didn't get it. And when you see these three things, leave the last part, it may be a matter of joke for some, but politics and religion are something which divide. You know, I may have an opinion. Why is a secret ballot? Secret ballot is because I am intelligent. I perceive a particular government's functioning. Tomorrow I go and vote for or against it. It is not meant that I come on a WhatsApp group and where I have my best buddies from National Defense Academy and we get divided on political parties, you know, outcomes today. And we talk about it also, and we get, you know, not only did we talk and put facts, we get charged. Do you imagine the social media and this kind of a mindset coming into a disciplined kind of people who were yesterday in the army and today are off and they're in a veterans group? People have got political inclinations. I may also have. For the record, I have not voted yet. In my entire career in army, I got 2 ballots by post, and by the time I could send it, it was already election over. So it had no meaning. And when I left my position as an army officer, I couldn't vote the last time also, because when I applied for my voter ID, I was told after 2 months that your name is in the military roll, so you can't be having a voter ID. So I didn't vote again. So I went to the booth hoping my name would be there. It was not there. So I will vote after achieving 50 years of my age in the year 2024. But I will not be talking about it. Yes. So if you want to canvass, you want to talk, do on social media, but that should not divide you and me as friends, if we have been friends for the longest time. So that is the problem. So if you understand how divisive we can be made, how gullible we already are, and where it can lead to, and these are not about only, you see the politicians, many are well versed with life and they are very well educated. I'm quite sure they understand what's happening. You know, vaccine, oh, India has failed. My dear, there has been no vaccine in India which has come to India after a pandemic has been raised in the world. We have not made a vaccine ranging from 5 to 30, 40 years. Then only India has made a vaccine. This time, the world made the first vaccine in 2020 and we made in 2021. This is the fastest. And it has to go through a process of trials. You don't make for 130 crores in trials only. You make only to get the patenting done and the trial to be passed by the regulatory authorities. And then when it is passed, you think of a scale up. So that's what's happening. If I correlate, after that only Adar Poonawalla has said, I can ramp up, give me 3,000 crore rupees as a aid today to start with as a loan. So that is the way. And then when you start manufacturing, the manufacturing has got a limit. Easy to say that formula should be shared with 50 people and all 50 should start making. They have to then make a consortium because somebody has patented. Even to do this process as per the regulations today in the world market and in the Indian regulations, it will take a year. Right? So somebody has to continue producing. Modi has to go to abroad and ask for medicine. And then what do we get in the media? Oh, after 17 years, we are begging the foreign nations. We have gone with a bowl to get vaccine. Is that the narrative? Would any government of anywhere in the world want their citizens to be devoid of an opportunity to get a vaccine and not get vaccinated? And they will say, no, hum nahi karte. And then people will make a joke. What happened to Make in India, Atmanirbhar Bharat?
Who are these people? These are educated, vultures who are trying to create a narrative which is detrimental to my country today, because that is not the correct narrative. The first wave, whatever wave in US could not defend. I have enough friends there. You have enough friends there. They were not supposed to enter hospitals till a particular critical state came. But here, everybody with 92 O2 saturation expects an ICU bed with oxygen. I also went through COVID. I'm still recovering with a lot of medication. I was 89 one night, and my wife was very sure that I'm going to hospital that night. I didn't go. I said, I can breathe normal, don't worry. So yes, took steroids, did whatever my doctor said. But all are not educated. You imagine somebody who has got a hyper ventilated approach towards corona. It's been talked about in the world media. It's all over. The presentation of our media is also gloomy and negative. And if I get a sneeze tomorrow morning and my O2 drops to 92, I am demanding a bed. And for 70 years, have we made 30 lakh ICU beds? We have not. So there are only 10 lakh. So citizens can only understand this and take the right decision if they are educated. Hoarding. Who is hoarding? There's a Gautam Gambhir who's got, few hundred there, but positive hoarding. So he's telling the world that please take this, use it, but I will give you only when you show me your Aadhaar card and your doctor's prescription. And after 14 days, give it back to me when you're well. But then the other 3 sets of hoarders are criminal. One could be you and me. I can afford it today. There's a medical shop here. I buy off all I want. Right? Just making sure that I have everything. I have oxygen cylinder, everything in my house. I have the money, I can do it. Then there are these people who are hoarding for money. 2014 floods came in Kashmir. And it is a shame. It's a crying shame that a bottle of, bottled water, Bisleri or whatever, 10 to 20 rupees worth, was getting sold for 200, 300 rupees on the Shikara. Right? So are we human enough to understand that it's a natural calamity? A pandemic is something beyond your control, and only human, warmth can make it lighter, not scroungers who want to sell something today. Oxygen concentrator, 70,000 on the net, suddenly off. Somebody's bought it, now he's selling you back for 3.5 lakhs. People getting caught. And the third kind of vultures, who are the worst, are the ones who want to hoard it for their own time and belittle a government. Right? Yes. There has to be a rule to make sure they are shown their place in the jails where they belong. And that is the pain point. That is the pain point. So if you don't act against these last 2 categories, the hoarders for money and the hoarders for, defaming your nation, how will you survive? And somebody asked me a question on a show. They said that, sir, can't our agencies pick up everything like CIA does? So first I had to tell them CIA cannot pick up everything. Secondly, for a country like ours where we didn't focus too much on intelligence, right? So intelligence is the bedrock of national security. We never did it to that fashion. Similarly, research and development is the bedrock of any manufacturing, right? So if you see these 2 points, you will understand that unfortunately we never concentrated on the edifice or the bedrock of a process. Why? Because it came cheaper from abroad, because people paid money to us and said take it from us, we are giving you. So we became complacent कि इधर से आ जाएगा, हमको क्यों बनाना, right? So tank bhi aa gaye, Russian tanks came, transfer of technology happened. In most cases Russia is a good friend, so TOT happened. And then we made Arjun, and then we talked about Arjun in a very funny way, that Abul Kalam ji is using his power to put it down our throat. It's not a good tank. Oh my dear friend, it is the best tank you have made indigenously. It started off with nearly 99% ex-import. It is today at a stage where nothing is ex-import except a small part of sites and some more parameters there in terms of money involved in that one tank. How do you scale up manufacturing? Right? So that is the point. We have to make sure that our future generation, and I'm concentrating, and people like your show, when you talk to people in UK, you can make that influence to say that, this positivity and this hope and faith needs to be there. People get so hopeless with situations. People come on the social media and they're talking about, the current government. We had faith, we voted them to power, they're not giving us ICU beds, oxygen concentrators, blah, blah, blah.
we will not vote next time. What is this notion? This is a notion of two parts. Firstly, your inability to see through the facts, and the second is the cabal created fallacy or the story against, which is getting ingrained in your mind and taking it off. And that is when I say the purpose of these infiltrators, not the ones coming from Pakistan, those $10 terrorists are not worth it. The money coming from people and the money bags abroad, the deep state, the evil Lexus and the cabal here, is to create that mind game, a doubt in my mind today, so that the youth is weaned away from critical issues, and then we take again a shape of how to make it more divisive. And that is what I want to say about the religion part. Whether it's the Hindu, whether it's the Christian, whether it's the Muslim, whether it's anybody, any faith in my country, we need to evolve together and see through the layers and understand. And it can only come that no matter what hate today I have, I will not kill somebody. That is the start point. If everybody can take that vow that I may have a difference of opinion, but I will not kill, that's the first stage. Because if you don't kill somebody, that voice remains, and you hear that voice, and tomorrow maybe you interact better. But in your fit of the moment, due to the hysteria created by the situation or by people who egg those situations, if you do this, then that is the first bane of our society. And that is something we must work around. And I'm quite sure the new generation, the younger generation, is much more wise than my generation and yours, and they are more educated and inclined probably. And if they are able to grow together without any cliches, without any hate, that is the way to shape the society. So it doesn't matter who you are, who you were. Like you mentioned in your narrative of this question that it's a Sanatan Dharma and we were all Hindus and people then converted. It's fine. It is something like to make a choice. It's a personal choice. You want to buy a Audi or a Mercedes, it's your choice, right? So similarly for religion. But like I said, my teacher told me, it is something which is inbuilt inside you as a faith. You don't have to impose on somebody else. Similarly, you may have a political opinion. Don't have to impose on somebody else. But you need to make people aware. And that is what should be. We should not become a society that tomorrow there are no people to talk to, because in one place we killed one lot, in another place we killed the other lot, and there is no other communication. Do you want to be that society or a country? No. Certainly India will not go that way. So it is important that we have conversations going. It is important that we educate our masses. It is important that the new generation has got better faith and hope. सारी खिचड़ी सरकार निकल गई आदि तो कोलेशन धर्मा में हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे वो साथी हैं वो मना कर रहे हैं इसको करने के लिए. So since we can't have a presidential system, which is the best thing happening today in the US, how about making sure that you vote en masse for a party, make sure Lok Sabha, Rajya Sabha are completely theirs 100%, and then pick up their manifesto and show them every day कि ये क्या हुआ इसका, right? And if they don't perform, they perform 80% or 50%, they give you reasons, gulp it, see it through a microscope of educated society and say, okay, I give you 5 more years, but do it. वहां तो हम पहुंचे ही नहीं है. यहां तो हर सीट बिक रही है. I was dining with some lady, old lady, about few years back when the first election I saw of this, AAP party coming into Delhi, and one of the political parties she was trying to canvass for and get a seat. She's telling me very frankly that she was hoping कि 50 लाख लेके सीट में लड़ने देंगे. वो तो 4 से 6 करोड़ मांग रहे हैं. And I'm not saying, I'm not, Arif ji, for once saying that this is something which is natural to every party or every discourse here. But if it was natural to somebody in some party, is it right? So you mean to say somebody who pays 4 crores and comes to a MLA seat with a wave and gets the seat is not going to make his 4 crores plus first? What will be his, outlook towards people, towards seva? Pradhan Mantri says, I'm the Pradhan Sevak. Right? He's probably got that notion and he's playing it to the core. How about the rest of us in any sphere? Are we even a sevak today? I will not use the word sevak more because people will say it probably is talking about RSS. That's how we twist things. I am saying a believer and a sevak of your country, a worker of your country, call it whatever you want to call it. Don't give it a quote.
So that is in short that, religion is fine, and I get from where you are coming, but I need an awakening of the masses in India to be more aware and educated to make the right choices first. We are not a country who's going to overthrow governments or something like that. It should not happen ever. But between that happening, due to whatever is happening today, and that stage is something which can happen maybe say with a 20% probability, our aim is that it becomes zero. And also the aim that each voice is able to be, shaped and spoken and heard, and each mind is, having a clarity to judge and exercise an opinion, irrespective of your caste, creed, or religion. सर, आपके इस पूरे उसमें एक्सप्लेनेशन में जो मैसेज क्लियरली आया है वो ये है कि इंडियन नेशनलिज्म शुड बी द प्रायोरिटी। आज से 100%. कुछ साल पहले मैं फ्रांस में रहता था, तो फ्रांस में एक नया लॉ आया था उस जमाने में कि आप जब अपने घर से निकले ना, तो अपना धर्म अपने घर पे छोड़ के निकले, सब कुछ छोड़ दें, क्रॉस और hijab or any religious sign when you are entering college, school or university, to bring up French nationalism। तो यही Right. चीज आपका पूरा जो अभी आपने जो बताया उसमें यही चीज आई कि आपका धर्म आपका पर्सनल इश्यू है, उसको घर पे छोड़ Right. दें। इंडियन नेशनलिज्म शुड बी द प्रायोरिटी। बिल्कुल आरिफ जी, मैं आपसे सहमत हूं। और आप देखिए फ्रांस में अभी क्या हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए, uniform civil code, whatever you want to call it, which is going to happen probably, sooner than later in India itself, is a necessity. Such a vast diversity. You may keep the diverse views and everything, like you said, at your home or in your society or your particular group of people, and cultivate that. It cannot be at the cost of a national interest. When I think as a businessman today, I think like a nationalist. I'll give you a small example. How difficult is this? I need a small part for my, say, one of my factories, and I place an order, and it comes from some country, and I pay X crores, and that company goes away with one AMC today, right? That's doable as a business, right? But I Yes. insist. I say, sir, why don't you come to Indian manufacture? Give me some jobs, have my economy getting spurred up. And the way to do it is that if it's a 10 rupee investment, today you are capex heavy, आपके पास आप मशीन लेके आएंगे वो बहुत करोड़ों के हैं, तो मान लो उसकी वैल्यू आज 10 रुपए में से या 100 रुपए में से मान लो उसकी वैल्यू 80 रुपए है। आप आइए, वेलकम। 20 साल बिजनेस करेंगे, 30 साल बिजनेस करेंगे, और वो जो आपके 80 रुपए हैं, अगर मुनाफा हुआ 10 रुपए का, तो 8 रुपए आप लीजिए, मैं 2 ही लूंगा। और जब 10 साल बाद आपकी मशीन का डिप्रिसिएशन आपको 0 पे ले आएगा, मैं आपको अगले 10 साल या 20 साल तक फिर भी 15% देने का साइन करने को तैयार हूं, आप खाली मशीन को चालू रखिए बस। तो मेरे को उस एमएनसी ने बोला कि श्रीमान, ये तो हमने कभी वर्ल्ड में आज तक नहीं किया, हम तो 300 साल पुरानी कंपनी है। मैंने कहा यार, मेरे से काम करना तो आप सुन लीजिए, ये एक ऑफर है, बाकी तो अब हमारे पास कोई अगर और ऑप्शन नहीं होगा तो खरीद लेंगे आपसे, वरना आपसे एक मशीन खरीदूंगा, पंजाब में दूंगा, जुगाड़ में उसको रिवर्स इंजीनियर करके बनवाऊंगा और वो यूज करूंगा। शायद आउटपुट 10 किलो का ना निकले, 4 किलो का निकले, बट 2 मशीन बना लूंगा उसमें। 1.5 महीने में वापस आए कि माई हेड ऑफ माई कंपनी वॉन्ट्स टू मीट यू एंड योर टीम मेंबर इन दिल्ली ऑन सो एंड सो डेट। सो आउटलुक चेंज करना है। तो कैसे होगा ये आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल? जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, और जब आप इंपोर्टिंग करते रह जाएंगे, टीओटी ले भी लेंगे, उसको अगर आप बोल नहीं रहे कि यहां आइए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उतनी आप उसको डिमांड नहीं दे रहे, वो आएगा नहीं, तो डिमांड ही चाहिए उसको। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात चल रही है। आप अगर इतना इजी कर दें कि उसका आना आसान हो जाए, एफडीआई पे जो कैश लग रहे हैं वो लग ही रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो वे फॉरवर्ड है ना। तो ड्रीम है मेरे नेशन का, मेरे करंट गवर्नमेंट का, जिससे हम सब सहमत हैं। अगर आपने सोचा होगा तो आत्मनिर्भर की जब बात हुई तो पूरे बच्चे से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छी बात, आज तक नहीं हुई हमारे देश में, सबने बोला। बट योगदान कब करेंगे? अगर किसी ना खासता हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल बॉयकॉट अ पर्टिकुलर कंट्रीज प्रोडक्ट, ये भी धारणा आई थी ना बीच में पिछले साल। कैसे करना है? सिर्फ लेक्चर देना है? नहीं। मेरे तो जहन में, मैं कभी कोई चीज खरीदता ही नहीं दुश्मन देश की, आज तक नहीं खरीदी, सिवाय एक टी शर्ट के, वो गलती से मैंने खरीद ली थी यूएस में, उसके मैंने व्याख्या की, तो खड़ा था उधर, तो उधर काफी वियतनाम शेटनाम के वो आते हैं कॉटन वाले, तो एक टी शर्ट अच्छी कॉम्बैट पैटर्न में लगी, फौजी टाइप, उठा ली। इंडिया पहुंचा तो देखा तो
वो मेड इन पाकिस्तान थी। तो गैरेज तो इतनी है कि जलाने का मन किया और फेंक देने का मन किया। फिर दिमाग आया, वो मिलिट्री दिमाग आया कि कल को लड़ाई हुई और अपने टैंक में बैठ के पाकिस्तान में घुसूंगा ना, तो इसको पहनूंगा, तो इट बी डिसेप्शन। So I will capture some equipment of Pakistan, use that in this T-shirt, and go and create more mayhem in some headquarter there and kill more people. ऐसे ही बता रहा हूँ, उस टाइम मैं काफी यंग था. That's not something I should converse to you on a show like this, but young था मैं. Similarly, एक देश है उसका मैं सामान खरीदता ही नहीं. तो अगर 10 करोड़ लोग भी वो सामान खरीद रहे हैं उस देश से, वो खरीदना ही बंद कर दें, तो कौन सा ट्रेडर या इंपोर्टर उसको लेके आएगा इंडिया में? लेके ही नहीं आएगा, बंद हो जाएगा अपने आप. बट लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ग्लोबल है, एयरपोर्ट बनाना था कि रोड बनाना, जो भी बनाना था, पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? ये देखिए इस गवर्नमेंट को, एक तरफ ये बोलती है और एक तरफ ये टेंडर पास कर दिया, राइट? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. The trade imbalance today, if you want to negate with a country like China, what is the role? The role primary is not infrastructure and the government decision. 30% or 40% is the citizen. लेता ही नहीं मैं, जो कर लो. आईफोन लूंगा ही नहीं अगर वो पार्ट बना हुआ है चाइना में, कुछ और ले लूंगा. मैं लिया ही नहीं आज तक. नॉट दैट आई कैन अफोर्ड इट. कंपनी में आया तो बोला ये एप्पल का ले लो, नहीं लूंगा, किसी और देश का ले लूंगा जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, अगर यहां नहीं मिल रहा तो. सो ये चीजें होती हैं. अगर वो मेरे जहन में है और वो आज मान लो 10 करोड़ भारतीयों के जहन में है कि हमने ये नहीं करना, सो इट्स अ स्टार्ट. It should be made into the zehn of at least 60 crores more to start with as a target for the next 10 years. How will it happen? It will happen only through opinion shaping. आपका जैसे शो में मैं अगर आज ये बोल रहा हूं, और मैं तो कोई भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम अ स्मॉल मैन, राइट, इवन बाय हाइट एंड स्टेचर एंड एवरीथिंग एल्स. बट इफ दिस शो इज हर्ड बाय 50 people hypothetically and 5 agree to this point that they will not buy, you imagine, then those 5 will also communicate to their friends and their relations and everybody else. This is the power of opinion shaping, whether you are opinion shaping against an enemy state for a warlike situation, whether you are doing for your own economic growth, whether you are doing for shaping your economy by manufacturing, and anything you are doing. Opinion shaping is something which everybody must do, and that has been my key result area, even in the uniform. I was on all social medias, whereas they used to ask me, there used to be a list coming. Please give your following details. You are on which social media and what's your email ID, personal email ID. And I should write, I will not give. I wrote that. It was towards the end of my career, last 3-4 years. They were very particular. I said, no. Why should I? If I made a handle on Twitter that time to negate the Pakistani propaganda, it is helping my nation. Why should I give that handle to you? And tomorrow you will tell me to close it. In 2013-14, I used to tell my 15 corps commander there, and a lot of people probably you know of General Dua and Saha and all. And through my GOC, I said, why don't we open our own cells, IT cells? Even if in every unit 4 people do it for 2 hours a day, a huge dimensional change. Even in a country of 130 crore, 30 crore do this every day. Pakistan की तो population ही नहीं उतने बटन दबाने को, right? So forums where you go, where you represent, very good. You see, you had a UN representative, na? That lady Lodi, Maliha Lodi or somebody, right? Yeah. And she was all powerful for a long time. I acknowledge that. But the way the narrative has been changed for the last 3 or 4 UN reps from India, and I especially remember Syed Akbaruddin ji, who was there, phenomenal. The kind of diplomatic pressure, the engagements by the Prime Minister with various nations. He went to Southeast. People are counting his mileage and expenditure of Prime Minister, how much is he doing going abroad for a trip. He's not going for a holiday. The impact of US direct funding of Pakistan has been curtailed. Impact with US and Russia is direct, right? So people understand. I think educated people understand, but I am more miffed with people who are educated. They understand, but just because they are on the other side of this political discourse, they spread canards and they spread a lot of lies around. That is something which is a little painful. If you can call a spade, and if you have heard me till now, I have not put a wool over the कमियां जो मेरे देश में हैं, वो आपके देश में भी हैं, वो जो यूके में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूं. बट अगर कमियां हैं
उस कमियों को कोई एक्सप्लॉइट कर ले मेरे देश के अगेंस्ट, मेरे होते हुए, वो मेरे लिए लाजमी नहीं। So that's the short point, and we are all educated, like you said. आइडियल सिचुएशन बताइए आपने, आइडियल सॉल्यूशन यही होना चाहिए, एक कार्ड हर चीज के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपसे 1 घंटा लिया था, लेकिन आपने 2 घंटे तक मेरा काम चल गया, और इट वाज सच ए लर्निंग प्रोसेस। आई एम श्योर के दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपने बड़ा क्लियर विजन के साथ बात की है, एंड इट विल हेल्प पीपल लर्न एंड बिल्ड देयर ओपिनियन। Thank you very much, sir, for giving so clear Thank you, things. Arif ji. Namaskar. Jai Hind. Please take care. Thank you very much. अजीज Thank you. दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। आपको काफी कुछ जानकारी मिली। कर्नल साहब ने बड़ा डिटेल में चीजों को समझाया है, जो कि हम लोगों के लिए, जो कई चीजें हमें नहीं पता होती, हमारा ओपिनियन बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है। हम कर्नल साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे साथ आज इतना टाइम बिताया। और ये इंटरव्यू में 4 पार्ट में आपको पेश करूंगा, क्योंकि लोगों की शिकायत ये होती है कि हम एक साथ 2 घंटे नहीं देख सकते। तो इसको मैं डिवाइड करके 4 पार्ट में पेश करूंगा, और ताकि यह है कि लोग इसको अपनी सहूलत के हिसाब से, जितना जिसको एक साथ देखना है 4 पार्ट देख सकता है, और जिसको अलग अलग देखना है तो आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने कई चीजें सीखी हैं, आपको भी कई चीजें इसमें से सीखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच अजीज दर्शकों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।